Good morning, students. Now let us start with your next chapter. The name of the next chapter is conjunctions. So first of all, what is a conjunction? Conjunction is a part of speech that connects words, clauses or sentences. ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੋ words ਨੂੰ connect ਕਰਦੇ ਹੈ, clear, even clauses ਨੂੰ and also sentences. Okay, those are conjunctions. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ conjunctions. I went home and took my food. Okay, so ਇੱਥੇ ਦੋ clauses ਨੂੰ connect ਕਰ ਲਿਆ. I went home and took my food. Okay, so here and then give her a pen or a pencil. Again, though clauses are being connected. He is hard working but not intelligent. Again, coordinating conjunction. He is hard working but not intelligent. But is the conjunction here. I could not contact him because he was busy. Subordinate conjunction hai. So because he was. So here this is the conjunction. I talked to him while he was going to his office. Again, while is the conjunction here. Here I hope it is clear. देखो ना हुन. So next इन्हां दी types किन्नियां और किहड़े-किहड़े conjunctions हुंदियां. First is coordinate conjunctions ਜਿਹੜੀਆਂ कि बराबरी वाले दो units ਨੂੰ जोड़दियां. For example, two words ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ कि clauses आपस ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर ਹੈਗੇ ਹੈ. Those parts of sentences which are equal in stature ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ, those are coordinate conjunctions. And, but, yet, for, or, nor, so, also, hence, however, otherwise, therefore. Clear? Or next is correlative conjunctions. So correlative conjunctions ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ यूज ਹੁੰਦੀਆਂ, which are used in pairs. ਇੱਕ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ यूज ਹੁੰਦੀਆਂ, though they may be placed at different places in a sentence, but they are always used together. So ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ that, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ so as, neither nor. Clear? So हमेशा इकट्ठे यूज ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, either or, both and, not only but also, no sooner than, hardly, when, scarcely when. So these are always used in pairs. Clear? I work hard. Clear? So that I may pass. So ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਨਾ. Clear? So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. I work so hard that I may get good marks. So ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ as he is as hard working as his brother is. So these are always used in pairs. Next देखो ਹੁਣ. Next is subordinate conjunctions. So subordinate conjunctions ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ subordinate ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ stature ਘੱਟ ਹੈਗਾ. ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ who, whom, whose, what, when, where, why, how, if, till, until, while, that, then, since, because, after, though, although, whether, whenever, wherever, as if, as though, so that, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ यूज ਹੋ ਰਹੇ, as soon as, wherefore, and before. So these are also conjunctions. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ and they are very easy. So ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੋ words ਨੂੰ link ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ parts of sentences ਨੂੰ link ਕਰਦੀਆਂ, they may be phrases or they may be clauses. So now let us do some examples. देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ you cannot fill them blindly in a sentence,
बिना सोचे समझे जे हुण तुसीं इफ़ यू थिंक दैट यू नो ऑल द कंजंक्शनस और जिहड़ी मर्जी तुसीं लगा दोगे किसी भी सेंटेंस दे विच फिर तुहाडा गलत हो जाऊगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस फर्स्ट, ओनली दैन यू विल बी एबल टू यूज़ द राइट कंजंक्शन। हुण देखो जिस फर्स्ट हैगा ही वर्क्स हार्ड डैश हिज ब्रदर वेस्ट हिज टाइम। क्लीयर। सो हुण इत्थे की हैगा कि वो तो मेहनत करता है पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਵਰਕਸ ਹਾਰਡ ਬਟ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਬਟ। ਨਿਸ਼ਾ ਪਲੇਡ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਰਾਮ, ਹੀ ਵॉज ਪੂਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਵॉज ਪੂਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟਡ ਸੀ। ਕੰਟੈਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ पूरी तरह नाल संतुष्ट सी। ही वॉज पुअर बट ही वॉज क्वाइट कंटेंटेड। नैक्सट देखो आई रिस्पैक्ट हिम एज या बिकॉज, कुछ भी लगा सकते हो इत्थे, बिकॉज भी लगा सकते हो। आई रिस्पैक्ट हिम एज ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। आई नो यू बेटर दैन ही डज। क्लियर। मैं तुहानूं उहदे तो बैटर जानदा है। नैक्सट देखो टेल हिम दैट आई विल कम। नैक्सट 3-3, सो की आएगा 3 and 3 मेक 4। वी कैन ट्रैवल बाय लैंड। हुण तुसीं इत्थे खुद ही देखो कि तुसीं एक तरह नाल ही ट्रैवल कर सकते हो ना, या तुसीं जमीन के रस्ते जा सकते हो या पानी दे। सो इत्थे की होगा वी कैन ट्रैवल बाय लैंड और वाटर। यू शुड वेट until he returns, जदों तक वो आ ना जाए। till भी आ सकता है तो until भी आ सकता है। I know not why he left us, so I do not know why he left us। so आज थोड़ा जिहा आपां कवर किया है। tomorrow I'll do some examples also। so now I make an